Hello, good morning, everyone. Thanks for joining us today. So, today we'll be going through how to make the best use of Strike and basically to come up with the, stock ideas which can be helpful for you to, maybe trade and invest. So what we'll do is that we'll wait for a minute or two and let more people join, and then I'll start the webinar. And yes, we'll be doing one thing for sure, that we'll be covering it in English and in Hindi as well, so that it becomes useful for everyone. So quickly, let me share my screen. Yeah. So, I'll just give you a brief introduction of, Strike platform for those who are new. So basically, all the features, जो भी हमारे फीचर्स है स्ट्राइक पे, वो सारे आपको लेफ्ट मेनू पे आपको मिल जाएंगे, जिसमें हमने डिस्कवर, एनालाइज एंड लर्न, ये तीन चीज़ों में बाइफरकेट किया है. एंड फॉर ऑल योर एनालिसिस एंड एवरीथिंग, डिस्कवर एंड एनालाइज विल बी द वन विच विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. तो इसमें से वी I mean, see, in this webinar, basically, what I'll try to do is that I'll try to teach you the process, like how to find out good stocks. Okay, like basically through scanning and boiling down to that 10, 15, 20 stocks जहाँ पे possibly strength आ सकता है, right? And that is what we'll try to do. And later on, it is up to you. What different methods you can follow, or how do you want to analyze. But I'll share with you, my takeaways. So, what we will do is that this one, we will purely, keep it to the point only, जहाँ पे हम हर एक feature explain नहीं करेंगे, because each of this feature, if you see, is explained on our YouTube channel. If you go on strike_IC, okay, and you find anything, okay. So जैसे कि सपोज हीट मैप का वेबिनार करना आपको देखना है, so you just type heat map over here. You will come up with this webinar as well. Okay, आपको sentiment पे देखना है. So these are all the things that I'm going to talk about today. तो sentiment पे आप यहाँ पे टाइप करके आप क्लिक करोगे, तो आपको इसके सारे जो भी वेबिनार्स है वो सारे दिख जाएंगे, राइट. सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक टुडे, इसके सारे फीचर्स के इंडिविजुअल हमने वेबिनार्स करके रखे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे अगर आप हेल्प सेक्शन में जाओगे, ओके, आप हेल्प सेक्शन में जाओगे तो आपको सारे वेबिनार्स मिल जाएंगे. जैसे कि ये बेस्ट फीचर्स ऑफ स्ट्राइक आर द वन विच मोस्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. तो ये सारे के वेबिनार्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, हर एक मॉड्यूल के जो भी छोटे छोटे वीडियोस भी जो बनाने थे, दैट ऑल्सो वी हैव मेड इट एंड वी हैव पुट इट ओवर हियर. अपार्ट फ्रॉम दैट, दीज ऑल थिंग्स आप यहाँ पर भी आप टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा. जैसे कि RRG है, ठीक है, विच इज रिलेटिव रोटेशन ग्राफ. तो यहाँ पर भी आप टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा. सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, प्लीज गो ओवर देयर, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, राइट. सो विद दैट आई विल स्टार्ट. तो सी देखिए, हमें सबसे मेन चीज जो रहता है, सो वेट, आई जस्ट चेक इफ ओके, या. सो देखिए, हमें जो एक चीज जो सबसे मेन है, ओके, व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड इज दैट, एंड दिस इज आवर प्रोसेस दैट वी फॉलो. ठीक है, कि पहले हम ये देखते हैं कि मार्केट बुलिश और बेरिश. ओके, सो दिस इज basically step 1, that what we try to follow. Okay,
And to know that, we basically use sentiment indicators and diffusion indicators. Okay. Step 2 is that कि आपको ये जानना है कि which are the okay, wait, right over here I'll write market analysis. Okay, then here I'll try to find outperforming or underperforming index. That I will find it through either RRG or heat map. Okay, basically here what we are trying to do is relative strength analysis we are trying to do. Okay, where we are trying to find strong and weak stocks. Okay, once I have done this, मुझे इंडेक्स या मुझे स्टॉक्स भी मुझे मिल गए, then the step 3 that I'm gonna follow is for stock analysis, for basically for picking best stocks, I will use various scanners. Okay, so यही हम steps we are going to follow. Okay, so see, the beauty of this is that कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, आई मीन आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, आप पोजिशनल ट्रेडर हो, मतलब जिसमें आप 1 to 2 months या 3 months के लिए आप लेना चाहते हो, या आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ठीक है, ये सारे ही चीज आपके लिए रेलेवेंट है. द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज दैट यू कैन ट्वीक द टाइम होराइजन. ओके, मतलब अगर आप मान लो कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, तो आप सेंटिमेंट इंडिकेटर्स और डिफ्यूजन इंडिकेटर्स के जो भी शॉर्ट टर्म के लिए रेलेवेंट है, ओके, दिस आई विल गिव यू द लिस्ट, यू ऑल कैन नोट इट डाउन, तो वो आप यूज कर सकते हो. अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, तो आपको मीडियम टर्म सेंटिमेंट या डिफ्यूजन इंडिकेटर यूज करने चाहिए. एंड अगर आप लॉन्ग टर्म हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी देयर आर सेंटिमेंट एंड डिफ्यूजन इंडिकेटर विच कैन हेल्प यू. ठीक है, तो ये जो हम जो एनालिसिस जो करेंगे, ओके, so that is relevant for short term, medium term and long term. Okay, the only thing is that you have to understand is that the time horizon will change. Okay, this is the one thing that you have to keep in mind. Okay, similarly अगर आपको outperforming और underperforming stocks देखना है, तो again अगर आप short term के लिए देख रहे हो तो daily RRG काम आएगा. ओके, अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो आपको वीकली या मंथली काम आएगा. ओके, एंड व्हाट वी यूजुअली रेकमेंड इज दैट कि अगर आप पोजिशनल हो, मतलब मीडियम टू लॉन्ग टर्म हो, तो आप वीकली आरआरजी देखो, बिकॉज दैट इज अ गुड इनफ इंडिकेशन फॉर यू टू नो कि ये ट्रेंड कैसे चल सकता है. ओके, एंड देन अगर आपको स्कैनर्स में देखना हो, सो व्हाट यू कैन डू इज दैट आप आई मीन शॉर्ट टर्म के लिए देखना है तो अगेन आर्ली डेली का कॉम्बिनेशन यूज करो. ओके, वीकली के लिए आई मीन आपको थोड़ा पोजिशनल के लिए देखना है तो आप डेली वीकली का कॉम्बिनेशन यूज करो. और आप मीडियम टर्म के लिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखना चाहते हो, तो आप वीकली मंथली का इस्तेमाल करना. ओके, सो दिस आर द 3 बेसिक स्टेप्स दैट वी आर गोइंग टू फॉलो. ओके, now I'll show you that how I personally do it. ठीक है, I mean you might have a different way, but I am just based on these methods only, I am just trying to make you understand how to make the best use of it. Okay, now this thing you might want to note it down. Of course, this webinar is going to be recorded, and this will be posted basically on YouTube only in this live section. So whatever webinars that we are doing, okay, these all will get captured in the Strike YouTube channel in the section live. Okay, यहाँ पे heat map हो या sentiment हो या कुछ भी हो, RMI indicator हो, ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. Right now, this is something that you might want to note it down as well. जैसे कि मैंने इसमें क्या किया है कि मैंने टेम्पलेट बना के रख दिया है. ओके, नाउ ये जो अभी सपोज ये जैसे कि मैं डेली स्विंग का टेम्पलेट है, तो ये मुझे एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म के लिए मुझे हेल्प करता है. ओके,
Now each of this indicator we have already explained over here, okay, in sentiment indicators we have already explained over here, so I won't dig deeper into this, okay. But what I'm trying to help you do is that to segregate कि कौन से indicators कहाँ पे use करने हैं, okay. तो ये daily swing में you might want to note down कि daily और average swing, okay, ये आप use कर सकते हो to find very short term tops and bottoms, okay. By very short term I mean probably from 3-4 days to 3-4 days से लेके 1 to 2 weeks के लिए अगर आपको टॉप्स एंड बॉटम्स फाइंड आउट करने हैं तो ये दो इंडिकेटर आपको काम आ सकते हैं, ओके. डेली स्विंग, एवरेज स्विंग. अगर आपको शॉर्ट टर्म में फाइंड आउट करना है, ओके, अगर आपको शॉर्ट टर्म में टॉप्स एंड बॉटम्स आपको फाइंड आउट करने हैं तो ये मैंने टेम्पलेट बनाया है शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स के. तो वहां पे डेली स्विंग, एवरेज स्विंग, ओके, फिर ये डेरिवेटिव में ये पुट कॉल रेशियो, ओपन इंटरेस्ट 9 MA, ओके, एंड ब्रेथ में 20-day AD रेशियो, okay. These are the 4 things that I usually watch out for when I want to see short term tops and bottoms, okay. एंड हम थोड़ा इस पे ब्रीफली टच अपॉन करेंगे कैसे हमें फाइंड आउट करना है, बिकॉज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट लाइव मार्केट एनालिसिस इज समथिंग दैट वी विल ट्राई टू डू, राइट. तो एक तो ये है. फिर मीडियम टर्म इंडिकेटर्स में दीज आर द थिंग्स दैट आई वॉच आउट फॉर, ओके, जिसमें पार्टिसिपेंट पोजिशनिंग में FIIs का इंडेक्स फ्यूचर पोजिशन, क्लाइंट इंडेक्स फ्यूचर पोजीशन, ओके. अब फ्यूचर्स वाला देखना, ओके. देयर आर टू, वन इज नेट पोजीशन एंड वन इज फ्यूचर पोजीशन. सो व्हाट आई ऑब्जर्व इज फ्यूचर पोजीशन, ओके. FII इंडेक्स नेट फ्यूचर पोजीशन, क्लाइंट नेट इंडेक्स फ्यूचर पोजीशन, और क्लाइंट प्लस FII नेट इंडेक्स फ्यूचर पोजीशन. एंड इसमें मैंने 20 डे भी डाल के रखा है बिकॉज 20 डे वो दोनों शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में हेल्प करता है, राइट. तो ये मैंने मीडियम टर्म का टेम्पलेट मैंने सेट करके रखा है. एंड लॉन्ग टर्म का टेम्पलेट इज बेसिकली DIIs, ओके, जिसका पोजिशंस एक्चुअली पोजिशनली आई मीन फ्रॉम 6 months to 12 months also it becomes relevant. So that's where we have put it in the long term. So DII का net index future position, put call volume put call ratio, okay, which you will get it in this derivative data. Volume put call ratio 14 MA, okay. ये आपको लॉन्ग टर्म एनालिसिस करने के लिए हेल्प करता है. अगेन ये कैसे हेल्प करता है, दीज आर ऑल थिंग्स दैट it is explained, but we will briefly touch upon this right now, okay, just to understand ke where are we in the market, in that entire market move. फिर एक हम देखते हैं फ्यूचर OI बाय इंडेक्स, ओके. तो ये जो है ये आपको डेरिवेटिव डेटा में यहाँ पे मिल जाएगा, ओके. फ्यूचर OI बाय इंडेक्स and 40-day AD ratio, which is helpful for anticipating medium to long term tops and bottoms. तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे मार्केट ब्रेथ में जाके आप 40-day AD रेशियो. अभी आपको अगर टेम्पलेट क्रिएट करना है, ओके, तो हाउ टू डू इट. सो फर्स्टली ये सेंटिमेंट इंडिकेटर्स जो हमने देखा था, ये मैंने सेकंड यहाँ पे बटन है वहाँ पे हवर करके मैं सेंटिमेंट इंडिकेटर में आया, ओके. नाउ आई एम जस्ट रैंडमली गिविंग सम नेम, ओके. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2-3 इंडिकेटर में ऐड कर रहा हूँ. तो टू ऐड एन इंडिकेटर, ओके, मान लो कि यहाँ पे मैंने प्रॉप का मुझे डालना है, ओके, प्रो इंडेक्स नेट इंडेक्स फ्यूचर्स, ठीक है. यहाँ पे मैंने लाया और सपोजिंगली मैं इसको लेबल कर रहा हूँ कि ये मुझे शॉर्ट टर्म के लिए देखना है, फॉर एग्जाम्पल, ओके. शॉर्ट टर्म नहीं, सो आई विल गिव इट सम डिफरेंट नेम. आई विल से पोजिशनल इंडिकेटर्स फॉर टॉप्स एंड बॉटम्स, ओके. तो अभी मैंने अगर ये मैंने किया एंड इफ आई सेव इट, तो अब ये मेरा यहाँ पे टेम्पलेट में बन गया.
So now each time you don't have to come and you have to create it. Okay, यहाँ पे बस क्लिक किए, आपने पोजिशनल इंडिकेटर्स फॉर टॉप्स एंड बॉटम्स बोला तो ये बन गया, right? Even I think so this is something that you can do. In fact, if you have some other studies also that you do, that is basically, you want to do relative strength index and all, and then you save it. Okay, you can save it with this same name only. This is पोजिशनल इंडिकेटर्स फॉर टॉप्स एंड बॉटम्स, एंड ये आपने सेव किया तो ये इसको ही ओवरलैप हो जाएगा. ओके, सो नाउ व्हेन यू कम टू द सेंटिमेंट इंडिकेटर्स, सो मान लो ये मैं होम पेज से जाके मैं वापस में सेंटिमेंट इंडिकेटर में आ रहा हूँ, एंड यहाँ पर मैंने पोजिशनल इंडिकेटर्स फॉर टॉप्स एंड बॉटम्स कर दिया, तो यहाँ पे अभी RSI भी आ गया. ओके, सो दिस इज हाउ दिस कैन बी हेल्पफुल टू यू. सो इफ यू हैव अ टेम्पलेट कि आपको बॉलिंजर बैंड ऐड करना है या आपको इनके साथ कोई टेक्निकल इंडिकेटर्स भी करना है, तो बस इंडिकेटर्स में जाइए, उसे टाइप करिए. नो, सो लेट अस से वील पुट बॉलिंजर बैंड्स एज वेल. ठीक है, और इसको मैं वापस में सेव करता हूँ, एंड आई विल ओवरलैप on this one only, positional indicators. ठीक है, save, replace, yes. मैं home में गया, sentiment में गया. Okay, now you see that Bollinger Bands and all have come. Okay, so this is how this template will be helpful to you. Now see, नाउ लेट्स डू द मार्केट एनालिसिस. ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि ये प्रोसेस है विच वी आर विच आई यूजुअली फॉलो. ओके, सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू हाउ डू आई डू दैट. ओके, तो इसमें मैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म का मैं व्यू जानना चाहता हूँ. ठीक है, कि मतलब ये नेक्स्ट मान लो कि 5 दिन से लेके नेक्स्ट 3-4 महीने में क्या होने वाला है. आई एम मोर कंसर्न्ड विद दैट. ओके, so in that case what I will do is that within my sentiment indicators, okay, but let me go to the home page, let me come back so that you understand it better. तो मैं इसमें ये 3 चीज़ों का मैं यूज़ करने वाला हूँ. ओके, निफ्टी डेली स्विंग, जिससे मेरे को एकदम शॉर्ट टर्म का पता चलता है कि क्या होने वाला है. medium term, then your short term indicators and medium term. So I am going to follow these 3 templates and see कि market positioning में क्या हो रहा है. Okay, again see this I will run you through in a brief manner. So अगर आपको इसको in depth समझना है तो please help में जाइए, वहाँ पर ये how to find tops and bottoms in Nifty index using sentiment indicators. प्लीज़ उस पर जाइए, ये वॉच करिए. वीडियो 30 मिनट्स का है, इसमें सारी चीज़ें इन डेप्थ एक्सप्लेन की गई है. सो प्लीज़ गो एंड डू दैट. ओके, तो यहाँ पर अभी जब मैं ये एकदम शॉर्ट टर्म वाला देख रहा हूँ, तो इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पे एंड इफ आई एड अ मूविंग एवरेज, सो एक्चुअली आई यूजुअली एड बॉलिंजर बैंड एंड आई एड द 40 डे. ओके, तो इसमें अगर मैंने इसमें 40 डे ऐड कर दिया, सो द टिपिकल रूल दैट आई यूजुअली फॉलो इज दैट, एक सेकेंड ना, इसे बैकग्राउंड हटा दिया. ओके, सो नाउ द टिपिकल रूल दैट व्हाट आई यूजुअली फॉलो इज दैट कि इफ निफ्टी इज, अभी इसमें आप एक चीज आप प्लीज ध्यान रखिए कि हम टाइम फ्रेम के बारे में, आप जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आप आर्ली डेली आप देख सकते हो. इसका कॉम्बिनेशन आप पोजिशनल हो, ठीक है, मतलब आपका व्यू 1 महीने से 5-6 महीने तक का है, तो उसमें आप वीकली आप यूज कर सकते हो. ओके, तो अभी मैं अगर बोलूंगा कि ये 20 पीरियड के ऊपर स्ट्रांग है, मतलब आप अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो इट मीन्स 20 डेली मूविंग एवरेज. ओके, अगर आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर हो तो 20 वीक एवरेज के ऊपर है, तो मीडियम टर्म का अप ट्रेंड एकदम स्ट्रांग है. ओके, एंड अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हो तो 20 मंथ एवरेज के ऊपर अगर है, देन निफ्टी स्ट्रांग. ओके, सो प्लीज कंसिडर इट दैट वे. सो निफ्टी ट्रेंड very strong if
it is trading about 20 period average. Okay, I'm mentioning over here short term, hourly, daily, okay, medium term, daily, weekly, and long term use weekly monthly combination. Okay, तो यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ तो अभी इसमें क्या है कि ये 20 डे के नीचे भी चल रहा है और 40 डे के नीचे भी चल रहा है। तो शॉर्ट टर्म में अभी प्राइस एक्शन बता रहा है कि ट्रेंड वीक है। ओके, साथ ही साथ इसमें क्या हुआ था जो मैंने आपको बताया था कि एकदम शॉर्ट टर्म का आपको टॉप और बॉटम आपको जज करना है, तो उसके लिए ये डेली स्विंग है। ओके, डेली स्विंग, एवरेज स्विंग है। और आप देख सकते हो कि ये जब ये हाई पे आया था तब डेली स्विंग, एवरेज स्विंग दोनों थोड़े बहुत ओवरबॉट जोन पे आ गए थे। ओके, इनफैक्ट दिस हैड गॉन टू 87, आई थिंक, यस 87, और ये 80 हो गया था। तो यहाँ पे ना देयर वाज सम बिट ऑफ कंसर्न बिकॉज इवन प्राइस एक्शन में it was telling us that somewhere over here the resistance is there, because ये प्रीवियस हाई भी है और यहाँ पे 20 डे भी है। तो अभी जब तक शॉर्ट टर्म में इसके ऊपर नहीं जाता है, ओके, टिल देन देर इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। ओके, मतलब यहाँ पर से वो रिस्क है कि नीचे भी जा सकता है, बिकॉज आपका स्विंग और एवरेज स्विंग अब तक ओवरसोल्ड में नहीं आया है। लुक ओवर ईयर व्हेन इट वाज इन ओवरसोल्ड समवेयर ओवर ईयर। सो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा था कि निफ्टी नीचे जा रहा था बट स्मॉल मिड कैप्स ऊपर जा रहे थे। दैट्स व्हाई दिस वाज मूविंग हायर, बिकॉज ये हम सारे एफएनओ स्टॉक्स पे लगाते हैं, विच इंक्लूड्स लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप एंड मीडियम, आई मीन मिड कैप एज वेल, राइट। तो ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा था एंड यू कैन सी दैट समवेयर ओवर ईयर एक्चुअली देयर वाज दिस डाइवर्जेंस, बट मिड कैप स्मॉल कैप आई थिंक दे गॉट बॉटम्ड आउट समवेयर ओवर ईयर ओनली, राइट। तो यहाँ पर से ब्रेथ अच्छा होने लग गया था एंड दिस हैड स्टार्टेड टू राइज हायर। ओके, एंड सो इफ यू want to see this was 25th of October, right? If I do Nifty small cap, सो निफ्टी स्मॉल कैप वाज द वन जो सबसे पहले बॉटम आउट हो गया था, राइट। एंड इसका आप लो देखो तो देखो 25 अक्टूबर है। ओके, तो बेसिकली 25 अक्टूबर से ब्रेथ अच्छा होना चालू हो गया था, राइट। इफ यू सी मिड कैप और इसका आप चार्ट देखो तो यहाँ पर भी जो इसका बॉटम था दैट वाज समवेयर अराउंड 25। ओके, सो दैट्स व्हाई यू कैन सी दैट स्विंग ऑल्सो वो 25 से वो अच्छा होना चालू हो गया था, राइट। तो मैं ये डेली स्विंग में गया और मैं देख रहा हूँ कि ये 25 से बेटर हो रहा है एंड यहाँ पे थोड़ा डाइवर्जेंस आया जिसके लिए एक पुल बैक भी आया। सो नाउ ओवर ईयर, सॉरी, द थिंग इज दैट कि मुझे एक तो ये वाला ब्रेक करना है टू सी पॉजिटिव मोमेंटम इन द शॉर्ट टर्म। एंड इसमें अगर आपको ये सब आरएमआई और इसके साथ ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ चार्ट चाहिए, सो व्हाट यू डू इज दैट यहाँ पे निफ्टी 50 के आप चार्ट में गए। ओके, यहाँ पे ना वी हैव ऑलरेडी मेड दिस टेम्पलेट जहाँ पे आपको आरएमआई दिख रहा है, यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में डाउन ट्रेंड दिखेगा, बेसिकली हायर हाई हायर लो बना रहा है कि नहीं। ओके, सो दिस यू विल सी इट ऑन अ लाइन चार्ट ओनली, राइट। मतलब ये जो हमने जो कोड किया है दैट इज बेस्ड ऑन द लाइन चार्ट, सो दैट्स वेयर इट विल शो यू अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। एंड ये अगर एवरेज के नीचे है तो ये रेड बताएगा आपको। ओके, so here you can see that the momentum is in bullish mode, but it is not able to cross the average. तो डेली में अभी भी ट्रेंड थोड़ा वीक है, राइट। आई मीन इट इज ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द अप ट्रेंड, बट आई मीन ऑफ दिस करेक्शन, बट सो फार इट हैज नॉट डन सो बिकॉज ये जो जोन है ये वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। नाउ वीकली में इफ यू सी तो 20 वीक तो ब्रेक हो गया है। ओके, विच मीन्स दैट ये जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड तो हम नहीं कह सकते हैं मीडियम टर्म में, बिकॉज ये 20 वीक के ऊपर है। बट निफ्टी कैन बी इन एन अप ट्रेंड if it is trading above 40 period exponential average। अभी इसमें अगेन वापस पीरियड से मैं क्या मीन कर रहा हूं कि अगर आप शॉर्ट टर्म हो तो आप डेली आर्ली डेली देखोगे,
आप मीडियम टर्म हो तो आप डेली वीकली का कॉम्बिनेशन देखोगे, और आप लॉन्ग टर्म में हो तो आप वीकली मंथली का देखोगे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हो, ओके, तो वीकली में इट इज ट्रेडिंग अबाउट 40, ओके, इट इज इन एन अप ट्रेंड। डेली में इट इज ट्रेडिंग अबाउट 20। सो फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म देर आर नो साइंस ऑफ रिवर्सल येट, okay, at least on the price action. Your indicators are suggesting some sort of weakness, but price action is not suggesting so, okay. तो दिस गिव्स मी अ होप कि मीडियम टर्म में अभी भी ये ऊपर जा सकता है, ऑल्सो बिकॉज अगर आप ये देखोगे तो हर बार जब जब भी बैंड कंप्रेस हुआ है एंड द 40 वीक वाज अराउंड द सेम पॉइंट, तो वहां से निफ्टी ने रैली किया है, ओके, दिस वाज इवन द इलेक्शन डे लो, सिमिलर सेटअप, बैंड टाइट था, ओके, नैरो हो गया था एंड ब्लू लाइन पे 40 वीक पे था, एंड वहां से अगेन हम पुल बैक देखे ऊपर में। तो कैन दिस रिपीट? yes, possibly it can, okay. So that is why I am very I am looking forward for a, if not anything तो एटलीस्ट यहाँ से एक पुल बैक तो आना चाहिए, ओके, मतलब ये जो इतना बड़ा सपोर्ट जोन है, आई डोंट थिंक दैट दैट शुड बी ब्रोकन इन अ हरी, okay. So what I would anticipate is that at some point of time we get some sort of bounce, okay, and ये मैं try करूंगा validate करने with our sentiment indicators as well, okay. So you can see that every time whenever band or band tight hota hai or 40 is around the same point, these levels work very well, and you, if not anything, तो आपको immediate decline तो नहीं मिलता है, but at least एक bounce तो मिलता है। तो वो bounce पे से बाद में आप figure out कर सकते हो कि how the trend is actually gonna be. So this is where we are right now. There is a lot of panic in the market, बट व्हेन आई प्योरली लुक एट द चार्ट, ऐसा लगता है कि ये जो जोन है बेसिकली जो लोअर वीकली बैंड है is at 23,701, okay, and 40 week is at 23,630. So I think this zone should not be broken in a hurry, okay, 23,630 से 23,701, and यहाँ पर से एटलीस्ट एक मे बी पुल बैक we can see. So now I will see whether the short term and the medium term indicators are telling me the same or no, okay. तो यहाँ पर मैं शॉर्ट टर्म में आया, तो देखिए हमने ये पहले भी वी हैव एक्सप्लेन्ड दिस इन द वेबिनार्स मेनी टाइम कि अगर चारों इंडिकेटर्स एक साथ बॉटम होते हैं, ओके, चारों इंडिकेटर्स एक साथ बॉटम होते हैं, देन इट इज अ वेरी गुड साइन कि यहाँ पर से एक अच्छा ड्यूरेबल बॉटम बन सकता है, like you saw over here, okay, somewhere around, and again please if you all have question just make a note of it somewhere. जब मेरा presentation हो जाएगा which will be by 11:15 or so, तो मैं सारे आपके questions में address करूँगा, okay. So you can see that somewhere over here, that's where all most of the indicators had turned to this oversold zone. तो हमेशा ये पुट कॉल रेशियो ये थोड़ा लैग के साथ करेगा बिकॉज दिस इज अ मूविंग एवरेज दैट वी हैव अप्लाइड, ओके। तो ये हमेशा थोड़ा 2 3 4 दिन बाद ही ये ओवरसोल्ड में जाएगा, तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, ओके। इवन इफ यू सी समवेयर ओवर हियर, राइट, ओवरसोल्ड ये थोड़ा 2 3 दिन बाद हुआ, बट दिस हैड गॉट ओवरसोल्ड जस्ट 2 3 डेज बैक। तो थोड़ा इसमें 2 3 दिन का लीड लैग होगा, ओके। आपको परफेक्टली सब कुछ एक टाइम पे शायद नहीं मिल सकता है, बट इफ यू सी इट देन नथिंग लाइक इट, ओके। ये सिमिलर चीज ना एक्चुअली यहाँ पर भी हुआ है, ये यहाँ पर भी कहाँ पर हुआ है, राइट। सो दिस इज वेयर देन समवेयर वी आर एंटिसिपेटिंग कि ये एक अच्छा बॉटम भी बन सकता है, ऑल्सो बिकॉज आप अगर प्राइस एक्शन में भी देखो तो ये प्रीवियस लो के इधर है, जो बेसिकली वो जो येन कैरी ट्रेड के वजह से जो पूरा जो फॉल आया था मार्केट में, तो बेसिकली निफ्टी उसी को टेस्ट करके ऊपर आने का ट्राई कर रहा है, एंड वी ऑल्सो सॉ दैट द वीकली एवरेज भी ये कहीं जोन के आसपास ही है, राइट। सो दैट इज वेयर आई थिंक दैट इमीडिएटली एटलीस्ट ये ब्रेक होना डिफिकल्ट है। अगर इसे ब्रेक भी होना है, then ideally what it would do is that somewhere it will bounce, maybe it may form an head and shoulders pattern sort of thing and only then break down, but that is what it feels like.
and that is what when I see the sentiment indicators, that is what it suggests me, because ये सारे oversold में थे and अभी ये oversold zone से निकलने को try कर रहे हैं, right? Now if I see the medium term indicators, okay, so medium term indicators में again what I see is that के FIIs का short, it is not still towards the extreme, okay, because हमने देखा है कि FIIs का short जब भी ये नीचे के दो लाइन के आसपास आता है, that's where a medium term bottom occurs. So in case of that we can say कि FIIs अब तक उधर नहीं पहुंचे हैं, but if you see client वो second line के आसपास आ गया है, and even it is a good recipe when FIIs extreme short होते हैं और client extreme long होते हैं, तो अच्छा बॉटम बनने का केस है, राइट? सो यहाँ पर अगर आप देखो तो निफ्टी इंडेक्स हैज कम, आई मीन this client positioning is coming towards that second line, okay, so this is sort of telling me that maybe a good durable bottom could be in place. अगर ये अभी देखो जैसे मैंने कहा कि अगर ये चारों एक साथ बॉटम का सिग्नल करते हैं देन नथिंग लाइक इट, बट समटाइम्स देयर आर सम इंडिकेटर्स दैट गिव अस दोज क्लू, जैसे कि आप एडी रेशियो भी देखें तो ये भी ओवरसोल्ड में आ गया था, राइट? तो इसमें अभी ये चार में से दो इंडिकेटर सॉर्ट ऑफ आपको कंफर्म कर रहे हैं, या दे आर टेलिंग यू दैट वी आर वेरी नियर टू दैट ओवरसोल्ड जोन, ओके? तो अब जब मुझे ये लगता है एंड देन व्हेन आई एनालाइज द प्राइस एक्शन एंड इट टेल्स मी दैट मे बी वी कुड बी समवेयर अराउंड द बॉटम इन द नियर टर्म, तो यहाँ पर बेसिकली ये क्राइटेरिया में मुझे ये इंडिकेशन आया, ओके, एनालिसिस टेल्स अस दैट अ बाउंस और एन अप मूव इज पॉसिबल in the near term, okay, this is what the analysis is telling us, right? So what I will do is that I'll try to find which are the best performing stocks or the index, okay, so ये मेरा second level filter रहेगा. So for that what I do is that पहले मैं heat map में गया, so for that I hover over here on heat map and I go to NSE indices, okay. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको ये हीट मैप दिख गया है जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे इंडेक्स है, राइट हैंड साइड पे स्टॉक्स विद इन द इंडेक्स है, ओके. So let me remove this filter and now you can see that all the stocks within IT, all the stocks within MNC and so on, this is what appears over here, right? तो अब मैं इसे थोड़ा डिफरेंट वे में रन करता हूँ. बेसिकली मैं ये जानने का ट्राई करता हूँ कि निफ्टी का टॉप एंड बॉटम किधर बना है, ओके, या स्पेशली निफ्टी का अभी ये केस में टॉप कहाँ पे बना था. तो निफ्टी का टॉप, इफ आई गो टू द डेली चार्ट एंड आई सी द टॉप इज एट 27th of September, ओके. दैट मीन्स मैं एक दिन पहले का क्लोज से मैं देखूंगा, विच मीन्स 26th, ओके. तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्कैनर्स में जाके मैं यहाँ पर जाके हीट मैप में जाता हूँ. आई गो टू NSE इंडाइसेस, यहाँ पे कस्टम में जाके आई डू के 26 September, राइट? सो 26 September जहाँ पर से टॉप हुआ से लेके अब तक what is the performance of the index, and you can see over here that the best performing index are PSU, IT, pharma, small cap, banks, financial service. In fact नहीं, ये सारे अभी negative होने हैं, but see whatever is above Nifty, these are all technically an outperformer, okay. But if you see in terms of correction and all, तो PSU bank in fact ये पूरे इसमें positive हुए. Okay, so there are some stocks individually which have risen higher, and I'll tell you कि आप वो भी कैसे आप spot कर सकते हो. Okay, just give me some time, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप stocks कैसे आप spot कर सकते हो. So अभी आपने ये देखा तो आपको broadly ये पता चल गया कि IT and PSUs are the ones which are outperforming especially in the near term, right? अभी आपको stocks देखना है तो यहाँ पर जहाँ पे NSE इंडाइसेस है उसी के अंदर देयर इज NSE ऑल स्टॉक्स, ओके. मैं NSE ऑल स्टॉक्स को मैंने किया
तो ये यहाँ पर वो कस्टम डेट अपने आप ही ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं अभी ये सारे एनएससी स्टॉक्स में से these are the three categories I will be more interested. I mean, I will be more interested in. Basically, the ones which have given the up move greater than 5%, between 2 or 5%, or they haven't been negative, which means 0 to 2%. तो इसको मैं क्या करता हूँ, now the best part of the strike is that you can make a watch list out of this. Okay, तो अब मैं आपको बताता हूँ इसे वॉच लिस्ट कैसे बनाना है. प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस बिकॉज दिस कैन सेव यू अ हेल लॉट ऑफ टाइम. ओके, तो अभी देखिए, अगर मैं इस पे डायरेक्टली जाके मैं क्लिक करता हूँ एंड आपको अगर वॉच लिस्ट बनाना रहेगा तो ये सारे स्टॉक्स ले लेगा, विच मीन्स इट विल टेक ऑल द कैटेगरीज का स्टॉक. ओके, एंड यू डोंट वांट दैट. सो व्हाट यू डू इज दैट आप स्पेसिफिकली कैटेगरीज क्लिक करो. ओके, जब आप ये 3 कैटेगरी क्लिक करोगे तो आपको खाली उसी के रिजल्ट्स आएंगे, राइट. तो अभी आपने ये कर दिया. नाउ व्हाट यू डू इज दैट आप यहाँ पे वॉच लिस्ट पे जाओ, आप यहाँ पे वॉच लिस्ट बनाने को देखोगे. ओके, सो प्लीज फॉलो मी वेरी क्लोजली ऑन दिस. यहाँ पे आपने क्लिक किया इस पे, यहाँ पे टॉप पे आप गए, यहाँ पे आपने सपोजिंगली बना दिया एक वॉच लिस्ट सेइंग आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स. ओके, आपने ये आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स का आपने लिस्ट बना दिया, क्रिएट वॉच लिस्ट. अभी यहाँ पे आपको 0 दिख रहा है. नाउ द मोमेंट यू ऐड एवरीथिंग, ओके, ऑल द नेम, नाउ बिकॉज आई हैव सिलेक्टेड दीज थिंग्स, ओके, तो ये खाली उतना ही लेगा. तो यहाँ पे मैंने आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में सारे नेम को प्लस कर दिया, तो इट हैज टेकन ऑल द नेम्स. ओके, नाउ व्हाट आई डू इज दैट ऐड टू माय वॉच लिस्ट. अब आप जहाँ पे देखोगे कि आप होम में आओगे, यहाँ पे वॉच लिस्ट में देखोगे तो ये आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में आपको 864 स्टॉक्स आपको मिल गए. ओके, जिसने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया था इन द एंटायर डिक्लाइनिंग फेज. सो बेसिकली जब भी निफ्टी टॉप से बॉटम में गिर रहा था, ओके, आई मीन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, द लिस्ट विच इज देयर इन आवर वॉच लिस्ट, ये सारे स्टॉक्स ने एक्चुअली पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, राइट. अभी आपको ये आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स मिल गए. ओके, सो बेसिकली आई हैव डन इट थ्रू द हीट मैप. ओके, आपको आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स मिल गए. मैं आपको अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स का भी बताऊंगा आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, एंड वो आप एफएनओ में आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो. आई विल शो यू दैट एज वेल. जस्ट फॉलो मी ऑन दिस पार्ट. ओके, अभी हम जो कर रहे हैं वो, वेट आई विल जस्ट चेक इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस. ओके, so Sumit, see, basically for intraday you can also use a combination of 30 minutes and 1 hour, but as of now we don't have the scanner for 30 minutes, but you can definitely use 1 hour for your stock selection, और उसके बाद you can try and find out those stocks. But as we progress further, in next couple of months we have already started the work of bringing down the time from 5-minute lag to 1-minute lag. Okay, तो वो जो 1-minute snapshot जो है अभी वो hopefully आना चालू होंगे in next some time. Okay, just give us some time. We are working on all the optimization and all. So once that happens we will build more scanners for intraday as well. Okay, तो अभी आपको ये 864 स्टॉक्स मिल गए. तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डिफरेंट व्यू से मैं देख सकता हूँ. ठीक है, नाउ आई एक्चुअली फॉलो आरएमआई अ लॉट. तो मैं क्या करूँगा कि इसमें बास्केट में, ओके, आई विल रिमूव एवरीथिंग एंड आई विल जस्ट पुट आउट परफॉर्मर स्टॉक्स. ओके, नाउ सी, नाउ लाइक आई टोल्ड टू यू, इफ यू आर अ मीडियम टर्म इन्वेस्टर, ओके, what you will watch out for is basically daily and weekly का combination. Okay, if you are long term then you will watch out for weekly, monthly, right, and that's how you will basically try and analyze. तो अब मैं मान लो, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में एक बाउंस आना चाहिए, राइट, विच वी डिस्कस्ड ओवर ईयर, कि यहाँ पर से इफ नॉट एनीथिंग देन ये पूरे डिक्लाइन का रिट्रेसमेंट आना चाहिए, विच कुड बी इवन टिल 25,000 और समथिंग लाइक दैट.
विच मीन्स दैट यहाँ पर से थोड़ा अप मूव मुझे लग रहा है. इफ आई डू दैट देन आई वुड बी इंटरेस्टेड टू सी के शॉर्ट टर्म में कौन चलने वाले, राइट. फॉर दैट आई विल यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ईदर अर्ली डेली और डेली वीकली. ओके, तो मैं आपको ये दोनों चीज मैं आपको करके बताऊंगा. सो नाउ इफ आई गो टू स्कैनर्स ओवर हियर एंड आई हैव कम टू से RMI. तो मैं क्या बोलता हूँ, पहले तो मुझे आर्ली पे से फाइंड आउट करने का है स्टॉक्स को. सो व्हाट आई विल डू इज दैट यहाँ पर मैं बोलता हूँ डेली में गिव मी द लिस्ट ऑफ स्टॉक्स विच आर ईदर इन बाय और न्यू बाय. ठीक है, तो इसमें से 800 में से मुझे खाली 550 स्टॉक हो गए. ओके, एंड आवरली में कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो नए बाय दे रहे हैं. तो नाउ फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 500 स्टॉक्स आई हैव गॉट जस्ट 19 स्टॉक्स, राइट. तो अभी मुझे अगर शॉर्ट टर्म में कुछ करना होगा तो मैं आई विल रेफर टू दीज चार्ट्स. ओके, ये देखो मैं जैसे मैं एक एक में क्लिक करके मैं स्कैन कर रहा हूँ. ओके, एंड आई ट्राई टू फाइंड विच आर द गुड सेटअप्स. नाउ इफ आई सी दिस whatever this name is COMCNY, so these are all symbols that you will see. यहाँ पे अगर आप टाइप करोगे SYN, so this is basically commercial sin bags limited. तो इसमें आप आपका एनालिसिस भी कर सकते हो कि ओके यू नो दिस इज बेसिकली द रेजिस्टेंस, यहाँ पर ये बाय में आ रहा है. ओके, यू नो दिस द सेटअप कुड बी गुड. एंड आपको आप इसको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे भी आप देख सकते हो. ओके, डेली, वीकली, मंथली, तो ऐसे आप देख सकते हो. एंड बिकॉज इट इज अ न्यूली लिस्टेड स्टॉक्स तो मंथली में NA आ रहा है, बट से DIC लिमिटेड. ओके, व्हाई इज दिस. Okay, so there are this couple of things in intraday. I think with this we'll try to get it sorted. तो यहाँ पे अगर आप सपोज उसका डेली चार्ट आप देखना चाहो तो so you know you can see that this is a consolidation and it is trying to break out from that. अगर इसका मैं वीकली चार्ट सेटअप देखूँ तो it is trying to break above the 2015 high, okay, which can be significant and interesting. So I might want to look at this stock. फिर endurance है, and that's how you know you can basically try and you know find out the stocks. Okay, now this is for short term and media this is for short term analysis. आपने दो टाइम फ्रेम यूज किया. ओके, बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए अर्ली डेली. नाउ इफ यू आर अ मीडियम टर्म इन्वेस्टर, ओके, शॉर्ट टू मीडियम टर्म, सो देन व्हाट यू विल डू इज दैट यहाँ पर आप गए, आपने देखा वीकली में कौन से बाय या न्यू बाय है एंड डेली में कौन से ऐसे है जो न्यू बाय दे रहे हैं. So from the list of 800 stocks, now you have come to 8-9 stocks. Okay, you can see BF investment. Okay, if I see the weekly chart, oh, this looks good because it is not breaking below the 40-week average. Okay, and it is trying to turn around. Okay, this can be interesting. CMRL. Okay, this seems to be a liquid stock. I'll skip it. I'll see Coforge. Okay, it is trying to give a crossover, but because this crossover is not below 0, तो मैं इसे you know इतना इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा. जैसे अगर BF इन्वेस्टमेंट आप देखो तो ये नीचे से जाके क्रॉसओवर दे रहा था, तो दिस इज अ गुड सेटअप आइडियली. देन EQ, ओके, ये 0 के ऊपर से दे रहा है, ये भी 0 के ऊपर से दे रहा है. Okay, this one SIL investment, ये डेली से दे रहा है. And if I see the weekly, okay, this is trading above the weekly averages as well. So this can be an interesting one as well. Thyrocare, ये डेली में नया बाय दे रहा है, but this is above 0. But if you see weekly, okay, weekly में भी 0 के ऊपर से दे रहा है. So this is not that interesting. So basically through this list, BF investment and SIL investment is what you know looks interesting. So now this is one way, like I told you. The other way, and also now I will now see the other way to look at this is के आप अगर हायर हाई हायर लो और आप खाली प्राइस एक्शन आप देखते हो, राइट, तो उसमें आपको कैसे करना है. सो नाउ आई विल रिमूव एवरीथिंग, आई विल डू आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स. तो अभी इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप डेली में जो अप है या डाउन से अप हो रहा है,
आप वो स्टॉक सिलेक्ट करोगे. सो अगेन ओवर हियर यू कैन सी दैट 500 stocks got selected, and hourly में which are the ones which are turning from down to up. So यहाँ पे आप जो भी क्लिक करोगे and you will see that the stocks are breaking above their previous swing high on the hourly chart, and that is why it is turning green. So this is another way that you can see what is happening. So you can see this stock, bed muta, whatever it is. So you can see that after a nice uptrend it is consolidating. Okay, so you might want to dig deeper. तो आपने क्या किया, इसको आपने एक और वॉच लिस्ट बना दिया कि पोर्टफोलियो टाइप और ट्रेडिंग टाइप स्टॉक्स. ओके, या तो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स, ये मैंने वॉच लिस्ट बना दिया. अभी इसमें से मैंने पहला ये डाला. ओके, सो व्हाट इट विल डू इज दैट कि यहाँ पर ना ये आपका इंटरेस्टिंग स्टॉक लिस्ट में आ जाएगा और ये आपके मार्केट वॉच में ही आ जाएगा. तो दिस यू कैन जस्ट कीप ऑफ, आई मीन यू कैन ट्रैक ऑन इट ऑन अ डेली बेसिस एज वेल. सो यहाँ पर आप गए, डेली, वीकली, मंथली आपने किया. सो you will be able to see the chart, right? So now once again I'll switch back to the scanner. Simply type over here, or you can go from the left hand side as well. आप डाउ ट्रेंड में गए तो योर फिल्टर्स विल बी इंटैक्ट. आउटपरफॉर्मिंग स्टॉक्स. ओके, सो सॉरी, ये अप था या डाउन टू अप? ओके, दिस, oh sorry, हम sorry, we were checking about daily and hourly, up and down to up, and ये down to up on the hourly chart. Okay, so this was one stock. The other one is this, okay, where it is trying to break above the previous high, इसलिए ये है. Okay, this is okay. Okay, this also, in the first look what it looks like is an inverse HNS pattern. Okay, this can be interesting. Okay, तो इसको मैंने यहाँ पे वापस वो interesting वाले लिस्ट में डाल दिया, add to watch list, and that's how basically you can make a watch list out of that. Okay, so that you can keep tracking it. Now if you are a positional investor, say for few days to few weeks, so what you will do is that आप ये सेम फिल्टर्स आप वीकली में लगा दोगे, which are the stocks which are either up or which are turning from down to up, and डेली में which are the ones, wait, ये मैंने फिल्टर डाल दिया था. So now डेली में which are the ones which are turning from down to up. So ये आप देखोगे कि ये डेली में जो है जो अपने स्विंग हाई को ब्रेक कर रहे हैं, and that is why it has got detected. So the beauty of this is that you can see कि वो हमने ये स्कैन रन किया कि विच आर द आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स, राइट? उससे हमें 800 का लिस्ट मिला था, करेक्ट? एंड वो 800 के लिस्ट में से नाउ व्हाट वी हैव कम डाउन टू इज जस्ट 10 स्टॉक्स बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन ब्रेकआउट. ओके, सो दिस इज हाउ इट कैन रियली हेल्प यू टू फाइंड थिंग्स वेरी क्विकली. ओके, सो दैट अभी सपोज ये वाला जो था, ये जो पहला वाला जो स्टॉक था हमने जो देखा, now this is something, this is very unknown to me, right? So what I do is that मैं यहाँ पे उसका मैंने टाइप किया नेम इज बेड. ओके, सो दिस इज इंडस्ट्रियल. तो इसका मैं जाके मैं क्विकली मैंने फंडामेंटल्स देख लिया कि ओके ये क्या मतलब हाउ आर देयर क्वार्टरली रिजल्ट्स प्लेइंग आउट. सो इफ आई वांट टू सी इट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, तो यहाँ पे मैं growth percentage किया, and you can see that okay, almost every quarter on quarter, year on year basically growth, everything year on year is seeing a good pickup of 18-20%, and PAT is going up a lot more. Okay, so this is a good sign. Even I want to see quarter on quarter, तो ये आपको दिख जाएगा कि okay, there was one quarter of degrowth quarter on quarter, but the PAT had increased. But PAT is consistently increasing in the last 4 quarters, basically quarter on quarter. If I do the same thing on annual, and I can see that okay, from this turnover which was 327, it is going to 826. The PAT is also growing in the last 2-3 years. Okay, this looks interesting. So मैं इसका बैलेंस शीट देखूंगा, कैश फ्लो देखूंगा,
So this is how within within a minute or two, you can find out everything. इसका financial ratios क्या है? So I want to see इसका debt to equity क्या है? Okay, debt to equity is fine. I mean, no, but it is 1 point something percent, which is a little high, right? So this could be a point of bother. अब मैं वैल्यूएशन में मैं देख लूंगा, ओके, कि ये ईवी टू एबिटा में क्या कर रहा है. ओके, इट इज अराउंड द एवरेज. ये पीई में क्या कर रहा है? पीई वुड बी वाइल्ड बिकॉज ये बीच बीच में लॉस भी किया है. सो वेन एवर इट इज मेकिंग लॉस, so technically we cannot show PE, so we are breaking the line. So now we'll see for more other this one. So book value, I think this was the part where it might have posted negative book value. So okay, valuations are little high. I mean, price to book is around the 2 standard deviation mark. If I see market cap to sales, that is also at a very high level. So this is something, I mean, at least fundamentally ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत cheap है या something है. So this, if I want to see it from a trading perspective, तो मैं इसे price action में मैं देखूंगा, right? And if I want to see the volumes, इसका volume कैसे हो रहा है, delivery pickup कैसे हो रहा है, these are all things that I can see over here, volume and delivery. So typically this is what I do, कि अगर मुझे एक स्टॉक मिल गया तो मैं उसके फंडामेंटल्स देख रहा हूँ ऊपर से कि इसका डेट कैसा है एंड सो ऑन, and then I see इसका delivery action कैसा है. You can see that there is a lot of pickup over here. Okay, so maybe technically it could be it could be forming some sort of triangular pattern. So this can come in my radar, especially when this price action breaks out. Okay, or I can then position size myself. And again, a disclaimer, I mean, this is not a recommendation to buy or sell anything, whatever we discuss. ये बस मैं आपको बता रहा हूँ कि this is how I look at things. Okay, and this scanner is something I try to run every week to find out which are the outperforming and underperforming stocks. Okay, now ये हमने outperforming stocks के लिए देखा, right? So now what we will do is that we will try to check कि आप अगर FNO में हो. Now see, what we discussed was that कि हम निफ्टी 50 का अगर हम चार्ट देखें तो वी वर एट दिस सपोर्ट जोन एंड वी आर एंटिसिपेटिंग अ बाउंस. बट व्हाट हैपेंस के ये जो एरिया है विच वी आर एंटिसिपेटिंग के ये बाउंस होगा इधर से, बट ये टूट जाता है नीचे. ओके, एंड दिस एवरेज इज ब्रेक ऑन द डाउन साइड. सो वी ऑल्सो हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द डाउन साइड, करेक्ट? तो इसमें मैं क्या करूँगा, अब मैंने हीट मैप मैंने रन किया था तो आई हैड सीन दैट Nifty had given somewhere returns of -7% or so in this decline, right? Nifty ने 8% जितना डिक्लाइन किया था, करेक्ट? तो अब मैं क्या करूंगा, मैं FNO बास्केट पे ये हीट मैप चलाऊंगा. ओके, सो हीट मैप might take some time. So yes, अब देखो ये मैंने कस्टम में जो डाला है ना, ये ऑटोमेटिकली ये हीट मैप पे भी अप्लाई हो गया. ओके, सो बेसिकली व्हाट आई हैव डन इज दैट 26 सितंबर से लेके फ्राइडे तक का मैंने प्राइस एक्शन परफॉर्मेंस में देख रहा हूँ, राइट? सो दिस इज द थिंग. नाउ व्हाट आई विल ट्राई टू सी इज दैट आई विल ट्राई टू टारगेट ऑल द स्टॉक्स विच हैव फॉलन लेस देन ग्रेटर देन 5%, राइट? तो इसका मैंने हीट मैप बना दिया सेइंग क्रिएट अ वॉच लिस्ट. इसका मैंने वॉच लिस्ट बना दिया, सॉरी नॉट हीट मैप, सेइंग वीक स्टॉक्स इन FNO. ओके, तो यहाँ पर अगर मैं इसको सबको मैंने ऐड कर दिया तो ये ऐड टू वॉच लिस्ट हो जाएगा. यहाँ पर मैं एक बार चेक कर लूंगा. ओके, ये सारे स्टॉक्स आ गए. नाउ अगेन आई विल do the same filter. Now because in FNO you might want to trade for a short time frame, तो मैं इसे अर्ली डेली का कॉम्बिनेशन में लगाऊंगा. Okay, and what I'll try to find is that which are the stocks where the daily RMI is either in sell or they are in new sell. Okay, or basically they're giving new sell. And सॉरी इसमें ये मेरे सारे बास्केट आ गए. सो आई हैव टू डीसिलेक्ट एवरीथिंग एंड आई हैव टू क्लिक वीक स्टॉक्स इन FNO वाला बास्केट.
तो अब ये खाली एफएनओ बास्केट के पकड़ रहा है। तो वो जो हमने जो 123 स्टॉक्स देखे उसमें से 33 ऐसे हैं जिसका सेल या न्यू सेल में है आरएमआई, एंड आर्ली में विच आर द वन विच हैव गिवन न्यू सेल। तो इसमें मुझे खाली ये 2 स्टॉक दिख रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ABFRL, इसका मैंने आर्ली किया तो आई कैन सी दैट इट इज इन अ डाउन ट्रेंड, इट इज साइडवेज, इस जीरो के ऊपर से जा रहा है। ओके, दिस कैन बी इंटरेस्टिंग, ओके, ऑन द डाउन साइड। दूसरा है मुथूट। मुथूट का मैं देखूँ तो ओके, ये जो भी सेल दे रहा है ये जीरो के ऊपर से नहीं है। ओके, सो दिस माइट नॉट बी एज गुड as it was ABFRL. Now if you want to do it the same thing for positional, okay, तो आप क्या करोगे कि आप सेल न्यू सेल ऑन अ वीकली चार्ट एंड डेली में कौन से ऐसे हैं जो नए सेल दे रहे हैं। So now in this 12 stocks are giving new sell. Now I click on every one. Okay, I see Aarti Industries almost going back to the zero RMI and then giving a bearish crossover. Okay, this can be an interesting one, especially basically if this high doesn't break then. And I have to see then what are the downside levels that it can achieve. तो 436 इज द डाउनसाइड लेवल। देन व्हाट आई डू इज दैट मैं सारे चीज़ें मैं देखता हूँ कि वीकली में ये कैसा है, मंथली में कैसा है। ओके, मंथली में इट इज़ बिलो 2040। ओके, दिस इज वीक monthly is also in sell. So this can probably be a very weak stock in the near term. So this can be a nice idea probably from a positional perspective. Now like I mentioned, these are not a recommendation to buy or sell, but I'm just letting you know the thought process with which you can see. Okay, Bharat Dalmia, okay, this is the one. Averages are not breaking. So remember, whenever the averages are not breaking और ये cycle complete नहीं हो रहा है, मतलब which is means that RMI is not coming to zero line and going back, that means these are even more weak stocks. Okay, if you see okay, India Mart, this is weaker one. Motherson, okay, already gone. NTPC, it is consolidating below the averages, and now basically it is some sort of forming a triangular pattern. तो ये अगर ट्राइंगल पैटर्न ब्रेक डाउन होता है नीचे में, then this can be an interesting one. And that is how basically you can scan the stocks. Okay, so if you are an FNO investor, like you see now, see this is a very good setup because पुल बैक किया, प्राइजेस ने एवरेजेस को टच किया, एंड देन इट इज गिविंग अ सेल क्रॉसओवर. ओके, एंड यू कैन सी दैट देयर आर मल्टीपल बॉटम्स ओवर हियर. सो अगर ये रेंज ब्रेक हो जाता है नीचे में, then this can this can fall down a lot. That is what the chart is telling us. Okay, because it is, if you see monthly, maybe it is hovering around 40. Okay, so if that breaks on the downside, the downside level that can open up is still the lower band at least, right? So yes, that is how you can basically check all the charts, right? You can do the multi time frame analysis, and ये तो मैंने आपको खाली ये दोनों बताए, but you can also use the other ones like exponential moving average. Okay, now in exponential moving average, what you can do is that you will try to find which are the stocks which are below. So इसमें मैं simple में मैं usually for 20 SMA I use simple moving average. तो इसमें मैं वीक FNO stocks में which are the ones that are trading below the 20 SMA, below 20 SMA. So yes, these are the ones. Okay, so that is how you can again try and you can scan for yourself. और अभी आपको एक और फिल्टर लगाना है. ओके, बेसिकली कि आपने देखा कि दीज आर ऑल वीक स्टॉक दैट वी गॉट, राइट? तो अब मैं ये देखता हूँ कि निफ्टी इंडेक्स में कहाँ पे कोई अच्छा लेवल आई ट्राई टू सी. सो मान लो कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जब भी ये हाई बना था ना निफ्टी में, विच इज 26th, ओके,
मैं ये ट्राई करता हूँ देखने को कि वो जो सारे वीक स्टॉक्स है उसमें कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो व्हेन द निफ्टी वाज मेकिंग हाई, even then they were below the 20-day average. Okay, so that's where your look back period comes into play. Okay, so यहाँ पे मैंने right hand side में search किया for scanner tab, I went to that and I came to this tab. Okay, यहाँ पे मैंने look back period में मैंने 26 September डाल दिया. So now you can see that Biocon is the one. Okay, जो basically 20 डे के नीचे ही चल रहा है in this entire decline. Okay, so this is another way of filtering out the stock. अभी आप देख सकते हो डाबर, ये भी 20 डे के नीचे ही चल रहा है, मतलब these are the ones which are very weak stocks जिसका 20 डे भी ऊपर में ब्रेक नहीं हो रहा है. So especially when the market goes down, these are the ones that can be targeted. Okay, like this is another way of judging the relative strength. आइडिया ये भी 20 डे के नीचे ही जा रहा है, IEX 20 डे के नीचे जा रहा है, मन्नापुरम 20 डे के नीचे ही है, टाटा मोटर्स. Okay, so these are the ones which are very weak stocks. Okay, these are not weak just, but these are very weak stocks. तो this is again, अभी ये very weak stocks है ना, तो मैं क्या किया, अभी मुझे पता है कि ये वैसे डाउन ट्रेंड में है, तो मैंने इसका एक और वॉच लिस्ट बना दिया एंड इसमें मैंने लिखा कि वेरी वीक एफएनओ स्टॉक्स. ओके, वेरी वीक एफएनओ स्टॉक्स. तो अब ये वेरी वीक एफएनओ स्टॉक्स में मैंने सारे सिलेक्ट कर दिए, तो इट वुड बी सम 10-12 और वट एवर 9 स्टॉक्स विच आर देयर. तो ये अभी ये जब भी आ जाएंगे ना, ये या तो मैं इसको रोज मैं डैशबोर्ड में भी मैं लगा के मैं देख सकता हूँ कि व्हाट आर दे टेलिंग, और इसको मैं क्या करूंगा कि हर बार जब इनका वीकली आरएमआई सेल में आ जाएगा ना, सो इफ आई रिमूव नाउ ऑल द बास्केट एंड इफ आई डू वेरी वीक स्टॉक्स. ओके, अभी ये वीक स्टॉक्स में जब जब भी इनके आवरली, जब जब भी इनके आवरली न्यू सेल देंगे ना पुल बैक देके, तब आई वुड बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग देम. ओके, सो दिस इज अनदर वे दैट यू कैन डू इट. सो यहाँ पे मैंने फिल्टर लगा दिया है, बट हाँ, ओके, एनीवेज everything is in sell, but if you see Tata Motors is in new sell, Zydus is in new sell. Okay, these are all, but इनमें जब जब भी सपोज आर्ली में जाके ये अब जाके जब नीचे आएंगे, तब I can play for a very short term, right? So every time whenever it gives a bearish crossover above zero line, I can be interested in shorting the stock provided my risk rewards are good. So this is how another way that you can scan the stocks. So this is what basically I do. ठीक है, ये मुझे क्विकली अगर मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे 5-6 स्टॉक्स, सी वी आर नॉट गोइंग टू एक्चुअली buy say 100, 200, 300 stocks and so on, right? We would want to focus on the 10-15 stocks where we can take the bet with conviction. So that's where ये सारे जो आपको स्कैनर्स है और ये जो मैंने जो आपको मेथड बताया, आई मीन दिस वुड बी रिकॉर्डेड, तो आप एक बार वापस ये वीडियो जाके यू कैन अंडरस्टैंड दिस मेथड वंस अगेन इफ यू हैव नॉट फॉलोड इट. तो पहले हम क्या करते हैं, हम मार्केट का एनालिसिस करने का ट्राई करते हैं कि हमें बुलिश लग रहा है या बेरिश लग रहा है. ओके, दैट इज वन लेवल फिल्टर. सेकेंड लेवल फिल्टर इज ऑल्सो टू फाइंड आउट विच आर द आउट परफॉर्मिंग एंड अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स. तो अभी मान लो कि मुझे आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स या स्टॉक्स में मैंने हीट मैप में जो भी किए, उसमें अगर मुझे पीएसयू और आईटी आ गए, तो आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन दो स्टॉक्स फॉर बाइंग. बट एट द सेम टाइम इफ आई थिंक ऑयल एंड गैस, दीज आर ऑल दी अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स, तो उसमें से कोई भी मुझे सेल में दिख गया, देन आई माइट वांट टू शॉर्ट इट. सो दैट इज योर सेकेंड लेवल ऑफ कंफर्मेशन. दिस सम पीपल मे डू इट और मे नॉट डू इट. लोग खाली डायरेक्टली ये करके ये भी कर सकते हैं कि मार्केट पता है कहाँ चल गया, तो हम सीधा बॉटम अप अप्रोच लेंगे और सीधा स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे वेदर दे आर आउट परफॉर्मिंग और अंडर परफॉर्मिंग, एंड देन वी कैन टेक द ट्रेड सेटअप ओवर देयर. ओके, नाउ नॉर्मली टिपिकली दिस इज व्हाट वी यूजुअली फॉलो, कि अगर शॉर्ट टर्म है तो हम आर्ली डेली का कॉम्बिनेशन लेते हैं, मीडियम टर्म अगर है तो हम डेली वीकली का कॉम्बिनेशन लेते हैं, एंड लॉन्ग टर्म है तो वीकली मंथली का. एंड ऑफ कोर्स द वंस हु फॉलोज फंडामेंटल्स, यहाँ पे हमारे पास फंडामेंटल का यू विल सी द एंटायर मॉड्यूल ओवर योर. यू हैव वैल्यूएशंस वेयर ऑल दिस
1 HD 2 HD is plotted at your convenience. So basically आप 1 year का there can be 1 HD which is different, right? 3 year ka it can be different, 5 year ka it can be different. So just within a click, you can see all these valuation parameters for last 10-15 years, okay, 10-12 years. So this is basically market cap to sales, this is P, this is price to book value. So just in a glance, you can get to know. Even if you want to see the PNL and everything in a chart format, you don't understand figures, तो बस चार्ट देखिए कि इसका रेवेन्यू, ओके, रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, ओके, हाउ इज द पैट ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू. तो ये अगर आपको खाली एक ही चीज देखना है तो यू कैन डू दैट. नाउ दिस इज द पैट, you can see that there is a stagnant pat over here since last 3-4 quarters, and these are all the analysis that you can do over here. Okay, आप simply chart में जाओ, you can see it over here. If you don't understand figures, you can do it in chart. आपको growth भी percentage terms में देखना है, you can see it over here, and you can see that the growth is falling dramatically. So yes, so even if you're a fundamental guy, this can help you a lot. Even there is a chart that we have plotted जो बेसिकली टेक्नो फंडा है, जहाँ पे आपको मोमेंटम भी पता चल जाता है एंड आपको वैल्यूएशन भी पता चलता है, एंड दीज ऑल यू कैन सी इट इन वन स्क्रीन ऑल टुगेदर. ओके, ऊपर प्राइस है, दिस इज आवर प्रोप्राइटरी इंडिकेटर, रोहित मोमेंटम इंडिकेटर, एंड दिस इज आवर वैल्यूएशन, राइट? So how to use it, again I don't want to explain that in detail, but you can check out over here. We have made the videos, so how to do long term investment using strike valuation setup. This is what you can look into this. Okay, and apart from that, if you're a derivative trader or a or basically you check options, and so this screen is something which is very unique and you might not find it anywhere. So यहाँ पर आपको सारे 180 182 स्टॉक्स जितने भी है उसके हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ कहाँ पर है, कहाँ पर एडिशन हो रहे हैं और कहाँ पर लिक्विडेशन हो रहा है, ये सारे आपको एक ही स्क्रीन पे पता चल जाएंगे. एंड बेसिकली वेन एवर दे ट्राई टू कम नियर द कॉल बेस लेवल, आई मीन जहाँ पे कॉल का एडिशन बहुत हाई है, तो वी हैव ईदर कैटेगराइज्ड इट above resistance or near resistance. Okay, so basically see in near resistance आप देखोगे कि अगर ये 3000 पे M&M का कॉल का राइटिंग बहुत है, राइट? सो इट इज कमिंग टूवर्ड्स 1.5% ऑफ द कॉल एरिया, सो इट विल डिटेक्ट एज अ नियर रेजिस्टेंस. अभी आपको पुट के बेस पे देखना है. अभी सपोज आपको लग रहा है कि मार्केट बुलिश है, यहाँ से ये चलने चाहिए स्टॉक्स, तो यू कैन ट्राई टू फाइंड द स्टॉक्स विच आर नियर द सपोर्ट लेवल. बेसिकली ये जो पुट के बेस के बाजू में है, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि बॉश है तो उसका 35,000 है, तो ये दिस इज 35,185. सो दिस यू कैन सी. अगर आपको ओ आई चेंज के इस पे भी देखना है, ओके, कि किस में ओ आई चेंज ज़्यादा हो, यू कैन सॉर्टेड बाय दैट एज वेल. जैसे ICICI बैंक है, 1260 का पुट बेस बहुत हाई है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ लॉट ऑफ एडिशन दैट हैज हैपेंड हियर इन फ्राइडे सेशन. तो टिपिकली यू विल सी दैट 1260 इतना इजीली ब्रेक नहीं होना चाहिए. So you might want to play it for the bounce or something like that. I mean, this is what you can do. Apart from that, futures in options, again there are many screens. Okay, multi OI, strike, ऑप्शन PCR. आपको हर एक स्टॉक का अगर आपको PCR भी देखना हो कि कैसा है क्या है, these are all things that you will get over here to understand the sentiment of the stock as well. So do look into this, do check out into this. Again, if you are a future trader, आपको open interest जानना है कि कैसा है, so this is what you can see it over here as well. Based on the category, I mean based on the built up and all, we have analyzed and we are putting it over here. So अगर आपको खाली long built up देखना है तो you will just click on long built up and आपको ये सारे stock long built up वाले आ गए. You simply click and you can see the chart on the right hand side. Even if you want to put your indicators, you can do that. Okay, so yeah, I think that's it from my side. I think if there are now any questions, I'll take it up.
So I'll try to take it from the top. At 10:30, it was Sumit. He was saying how to use strike selection intraday. So as I mentioned, Sumit, I mean right now we have only, I mean we have it only till hourly. Soon we'll try to come up with the lower time frame as well, as we come back to 15 minutes and 30 minutes chart. Sorry, just give me a minute. So there is. Can I see the recording of this session? Yes, you can see the recording in YouTube. There is this live section. So after the webinar is complete, you will see the recording over here. Okay. Just you basically type. I mean, you go to Strike IC. You can subscribe it so that you will get it, and you simply click over here and you will find the webinar. Uh, So another question was from Jeevan, what is Strike? So Strike is basically an analytical tool that we have built. जहाँ पे you'll get everything: technical, fundamental, derivatives, basically FNO fundamentals, and we have put many other unique things like sentiment indicators and so on. So you can watch that as well. You'll surely find it very helpful. Please explain for the short time stocks. So, Anibrata, I hope I've explained this. If you did not understand, please go through the webinar once again if you have joined late. But as I mentioned, अगर मुझे short term के लिए I have to check the stocks. Okay, I will use the combination of hourly and daily. That can help me to analyze the stocks. So जैसे कि मैंने आपको बताया कि I will go to the scanners. मैं कोई भी scanners को मैं जाके supposingly I use RMI very frequently. So वहाँ पर ये मैंने suppose मैंने आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स के मैंने बास्केट बना दिया था, right? So I go over there and I try to see which are the stocks which are giving me new buy, right? So now these are the ones that I might want to concentrate on. और आपको अगर further filter डालना है तो आप ये डालो कि weekly में, sorry, you mentioned of the short term, right? So इसमें आप daily में buy या new buy देखोगे और कौन से hourly में नए buy दे रहे हैं. So this can be one quick filter that you can use over here. Sorry, this is not buy, but you can see new buy. Okay, so these can be very quick filters that you can use. So on the hourly chart, if you see, you can see this giving crossover. Now again, the method to use RMI, we have given it over here. अगर आपको RMI नहीं समझता, आपको price action के basis पे ही खाली करना है, तो you can go to Dow trend. You can see the stocks which are turning from down to up. मतलब ये अपना daily में अपने swing high break कर रहे हैं. Okay. So इसमें मैं basket में हटा के मैं खाली outperforming stocks डालूंगा. So these are the stocks basically which are breaking above their previous swing high on the daily chart. तो ये आप short term में आप use कर सकते हो. Then the next question is from, can I see? Okay, recording that is done. How can we combine outperforming stocks with RRG and focus on Nifty 500 stocks only? So okay, see, Maddie, in this case, in what you are saying, तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि heat map में you can go, okay, choose NSE indices. Now I'll share with you the same method that we discussed right now, but ये हम खाली Nifty 500 पे we will run it, okay. So I told you, now see, now what we are doing is that we are trying to see the performance of the stocks between this time period, okay, 26 September to 8. अभी ये मैं खाली Nifty 500 के लिए मैं देख रहा हूँ, right? So once I click over here, now if I choose these three categories, these are the ones that have remained in bullish mode, or basically these are the stocks that have given me positive return, right, when the Nifty was declining. So now again what I'll do is that I'll make a watch list of this, okay, basically in the outperforming stock list or something like that. You can create a new watch list and you can make it. And again what I'll do is that I'll again follow the same process, that ये अभी सपोजिंगली ये मैं ऐसे में टाइप कर रहा हूँ Nifty 500 आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स,
Okay, see, the only thing that you need to keep in mind is that कि RRG में ना it only takes 50 stocks, okay, at a time. तो अभी इसमें आपको अगर RRG में करना है तो what you will do is that, see, you can simply calculate it. अभी ये 54 stocks है, तो what I do is that I remove these two categories for now. Okay, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 54 में से ये मैं सारे स्टॉक्स में सिलेक्ट कर रहा हूँ, बट आई विल रिमूव 4 स्टॉक्स फ्रॉम द बॉटम. 1 2 3 4. नाउ आई, आफ्टर हैविंग डन दिस, तो ये मेरा जो वॉच लिस्ट है ये 50 स्टॉक का वॉच लिस्ट बन गया, राइट? सो लेट मी चेक एंड कंफर्म इट ओवर हियर. सी, 50 स्टॉक्स का आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स, ओके, आई मीन विच आर निफ्टी 500. सो व्हाट आई डू इज दैट मैं आरआरजी में गया and I only select Nifty outperforming stocks. Okay, and so sorry, I think for some reason I think we will check into this. I don't know if my net is slow. Okay, this is working fine, but there seems to be. Okay, I hope I'm audible to everyone. Can you please type yes in the chat box? Are you all able to hear me? Because there seems to be a bit of a net. Okay, okay. So then I think there seems to be some issue over here. Uh, I mean, we'll try to check it. Okay, see. Now we have got all the stocks which are Nifty 500. Now you have to simply test the benchmark over here as Nifty 500. Okay, now you can see that ITI is the one which is crossing above this. So now with this, what you have done is that आपको एक ही लुक में you found out that okay, ITI is a outperforming stock, so you might want to check the chart and you might want to see whether it is interesting or not. So you simply type ITI at the top. आपने इसको क्लिक कर दिया, go to the chart and see if it is forming some interesting pattern or no. So इसको मैंने 1 year कर दिया and I see that okay, it is trying to break out above this trend line, right? So this can be an interesting one. So that is how you do it, Maddie. Basically, up 50 stock, but please remember, Maddie, that 50 stocks is something that RRG will take it. So you will have to make multiple watch list. So please note this thing, because the moment you do above 50, firstly it takes a lot of load on server, and that I mean, it will not display the result. So that is why what we have done is that we have disabled those ones where it is more than 50. So even what I've done is that मुझे RRG का अगर सारे FNO stocks का देखना है, तो what I do is that मैंने ऐसे 4 basket बना दिया, each have 50-50 stocks in it. So if you see ये, then sorry, I think I have put some filter. Yeah, so you can see that ये watch list 1, watch list 2, ये सारे stocks में I have put FNO का मैंने 50-50 stocks का बना दिया है. So if you see, it consists of 182 stocks in FNO. So I've bucketed in 4 watch list. And if I want to check FNO के stocks के क्या है, तो I simply just go and I keep checking it based on, say, FNO 1 आया. So now I can see that okay, Cipla is crossing over to the outperforming zone. Sun Pharma is coming into underperforming zone. JK Cement is very close. Okay, so these are the things that you can just simply go through the watch list and you will be able to get it in a quick glance. So there are many stocks which are coming in this 2 basket, which is SRF, TCS, REC, APL Apollo Hospital, and so on. But if you see, so like this, basically, you can quickly see it. And यहाँ पे, if you want to change the time frame, you can do it 60-minute hourly, 60-minute daily, weekly. What we usually recommend is daily and weekly, because hourly
is way too fast and monthly is way too slow. Okay, so basically these are the ideal time frames, daily and weekly, but you can see what suits you. The next one is that can we further shortlist the stocks based on market cap? So yes, Jagadish, you can see over there. See in the scanner. Uh, so I think we will put this one for Dow trend and this one as well. यहाँ पे हम basket डालेंगे with this is there in our list. We'll put it. But if you want to segregate it further, so for example, I was running it based on the moving averages, right? Uh, so over here, I was checking say outperforming stocks, and I was looking for the all the stocks. Say right now, I'm just removing all the look back period. Okay, about 20 SMA. Now you have got these many stocks. Now you don't want 0 to 500 wala stocks. Okay, so you just notice over here, here you're seeing 658 stocks. Okay, and so now this has come down to 401 stocks. मतलब आपका 200 250 stocks got eliminated because those were all below 500 market cap. So you can use this as well. Again, like I mentioned, we will put it in RMI and Dow scanner as well. These are the pointers that we have already put it. So we'll take care of this. Okay. The next one is from please reduce the width of RMI scans on so chart looks bigger. Okay, sure, Abraham, point noted. We'll do that because we noticed that actually in 14-inch screen, this is not getting adjusted. Again, while we optimize this part, we'll take care of this one as well. Okay, where this width and everything will be adjusted based on the screen. That we build. So based on basically your monitor width. How did you find that illiquid? So while explaining, if I see that there are a lot of gaps in the stock or something like that, I presume that those are all we illiquid stocks or so on. But anyways, illiquid is, the definition is, could be anything. For you it could be shares which have traded less than 50,000 quantity. For me it can be anything. That is individual, so let's not get into that. uh, Dixon chart. Okay, see, sorry, we don't want to get into stock specific. The whole idea of this webinar was to let you know about the process that you can follow to come down to that 5, 10, 15 stocks, so that it helps you. Because see, hamara main motto is that don't spend time on trying to find out stocks. Okay, spend time, once you find out the stock, try to get in depth of it. Like try to check the fundamentals, how it is based on volume and delivery, if there is any news or no. These are all things that you can quickly do it through Strike. So that is the advantage that you can get to that. Any bad testing which uh, testing be observed. So see, Anirbata, there is, see, on a standalone basis, none of the indicators will work more than 50% of the time. You can check it on the back testing. Okay, so that's why what we do is that we usually use the combination of scanners. Okay, so we try to filter out based on more and more indicators. So what we usually follow is moving average plus RMI and so on. So that is the way we follow. So that's why I told you, see, based on down to up and all, whatever stocks you get, 19, 20, 30 stocks, whatever you get, it is not that you go and you blindly buy it. Okay, but you try to see how the charts are, how it is based on moving averages and so on. We are working on the screener part, jahan pe you can put multiple conditions, that when the prices are turning from down to up, then are they above, and they should be above 20-day moving average and so on. These are something that we are already working on. It might take some time because we have to check each of the result very carefully, so that none of the wrong results are put out and so on.
we are working on that. Have some patience with us. We can assure you that we'll give you best of the class of analytical tool. But right now, the things that I've explained, that is what you can follow for now. Okay. Can we apply specific date on RS indicator like 1 2 3 date or specific dates? Yeah, so as I mentioned, I mean, see, price performance sort of becomes your relative strength. तो वहां पे आप कैलेंडर में जाके आपको 3 दिन का भी देखना है, you can just do that. You go over here, go to NSE indices. You want to see for 3 days. Okay, you see for 3 days. अगर आपको RRG में भी वैसे करना है, सी RRG में the only thing is that each day you will see the performance. Okay, the tail length may change. So यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 5 करके if you do it less than 3 days, so 3 days का price change it will tell you. Okay, over here. Now you observe over here, Bank of Baroda is minus 2.27. इसका मैंने tail length बढ़ा दिया, so it becomes 1.56%. Okay, so I mean, see, if you do it for 1 day, 3 day, whatever it is, on daily it won't affect. But here the only thing that will affect the relative strength analysis is your time frame at which you are looking, hourly, daily, weekly or monthly. Okay, so if you want to see for a very short term, hourly will work well. If you want to see it for little positional, daily will work well. For medium term, weekly will work well. Okay, I hope that addresses your question. In Dixon, okay, we don't want to get into the stocks. How do we find the consolidation range of stock using? So this, I think, Mohit ji has explained it. Please go to the webinar, that Mohit ji has done, or in the help section, there is a video of best features of strike, and you can see over here strike over insights. Here you can find out the consolidation breakout points, or in scanners. Okay, sorry, this was Amvi. Okay, please follow this carefully, Amvi. So in the FNO basket there is something called as Bollinger Band. Okay, in Bollinger Band, if you choose FNO stocks and you check out for the stocks which are early widening, okay, and you do it for hourly, so you will get the list of stocks जहाँ पे early bands widen हो रहे हैं. Okay, so these are the stocks where you might want to check के consolidation breakout हो रहा है या breakdown हो रहा है. Okay, so as you see, just to mention once again, in the scanners you go to Bollinger Bands, go to early band expansion, okay, and go to hourly chart. Okay, that will give you for short term. अगर आपको daily में देखना है तो daily भी मिल जाएगा. You can see all the time frames. Okay, so you can use that in combination with Strike FNO Insights to find out the stocks, which is very well explained by Mohit ji. Okay, I would encourage you to go and check that webinar. In fact, even in Strike, if you go, okay, मैं Strike channel पे गया, यहाँ पे search में आप type करो Strike OI Insights. There is this webinar that is done. There is a video that has been uploaded. So please go through this. Okay, I hope that will be helpful for you. Is there any chance to find if the Nifty is range bound on the upside and then outperforming stocks can follow the Nifty trend? So Amvi, the idea is to check the outperforming stock list through heat map. Okay, or you can check it through RRG. So basically the ones which are in leading are the ones where the outperformance is happening. So you can go to that. You can also please watch our RRG webinar. It will be helpful for you to understand how to basically find out the stocks which are consolidating or outperforming. New comments, yes, but interrupted.
Sorry, Ambi, can you tell what was interrupted? Sir, your valuation setup should be used for index only or no? So Vijay, you can use it for any stock as well. Now I will tell you one recent example. Okay, I mean not recent example. I try to do find out that. So suppose HCL Tech, when it was underperforming. So what I do is that if I want to find stocks, okay, which are having a valuation comfort and where the momentum is up. So what I do is that I try to find it on 1 year. Okay, say so for people who don't understand which valuation to use for what index, what stocks, we have done it over here. We have given, say, for HCL Tech, it is PE and market cap to sales. So I usually look at it by PE. So you can see that PE 1 year ke range mein, see valuation band, this na you can consider it as a Bollinger Band for valuation, simply put. Okay, तो ये जब नीचे में आता है and when the momentum is picking, this can be a good time to find an opportunity on the upside. Okay, कि अगर बुलिश क्रॉसओवर भी आता है, स्टॉक्स हायर टॉप हायर बॉटम बनाता है, सो दिस कैन बी अ गुड बेट. सो दिस वाज वन, एंड आई थिंक कोटक बैंक में भी जब वो बीच बीच में रैली आता था. So if I see this, if I go by price to book value, so you can see that, see over here also right now, it is towards the lower end. Okay, iska I think PE was in, it is also over here. So see now this is actually underperforming, and it is, so basically 1 year ke basis pe valuation mein it is below, it is to you have sort of a valuation comfort, right? What you would then want to see is that whether वो अपने averages के ऊपर आ रहा है कि नहीं. So that's the combination that you will follow. This is something that we have very well explained in the video as well. हमने वहां पे लॉन्ग टर्म के लिए बताया है, बट सी इफ आई डू इट फॉर मैक्स, the same logic I have to apply it for this one as well. Like you can see from a max perspective, say for price to book value, Kotak Mahindra is reaching towards this end. Okay, so see the three things that we usually follow is that हम bands लगाते हैं. Okay, we follow bands, we follow averages, we follow momentum, and we follow valuation. Okay, so this setup looks interesting if you see the chart specifically, right? Let me reduce it. Then you can see that some sort of triangular pattern is being formed in Kotak. So if the long term is giving me comfort of valuation, I would be very interested if it sort of breaks this zone, right? So that's how you can see, that's how valuation setup can be helpful to you if you're a short term, medium term. So see, if you're a short term, use 1 year. If you're a medium term, use 3 or 5 years. And if you are a long term, use 10 or max. Okay, what we have done is that we have taken it one step forward, and हमने कौन से मोमेंटम इंडिकेटर्स भी आपको देखने हैं, यू कैन चेक इट. लाइक 1 year में हमने डेली अलॉट किया है. ओके, वी शो इट विद डेली. इफ यू गो टू 3 year, हमने वीकली किया है बिकॉज वीकली इज पोजिशनल. ओके, 3 and 5 years इज वीकली. 10 years is monthly. Okay, 10 and max we have done it monthly. But if you also want to see it for weekly, you simply click over here, do it weekly, and you will get it weekly over here. Okay, so it is up to you. You can play around the way you want. आपको daily देखना है, daily देखो. But yes, all the options are available for you to see over there. Okay, how can we take the reference of your selected stocks? So I have explained you, Vijay. I've explained in this webinar. You can have your own method. I can show you. You can have your own method. So Jagadish, basically, see, we have made this scanner. Okay, the reason why we are not going live with this scanner is because we are optimizing it. And if we go live with this and something breaks over there, it can create a big mess. So have patience, but just to let you know, we have built everything over here. Okay, just have patience for some time. But you can see over here that say pat growth. Okay,
Now I'm seeing growth numbers. So PAT growth more than 20 years. I mean more than 20% on Q basis. Okay. So this entire result you will see it over here. Okay, the growth is say 9,000% over here and so on. I mean these are all something that we have built it. The only reason we are holding back is because we are optimizing it, and we want to bring the system quickly to 1 minute delay. Okay, as soon as possible. Once we are done with that, all these fundamental scanners which we have made. In fact, we have also made the scanner on the strike valuation setup which I was just mentioning to you. Okay, so these are all screens that are working a bit slow. That is because we have, I mean, while optimizing it, we'll make these screen very quick and fast. But you can have everything over here. Basically, placement में अगर आपको चाहिए कि, so wait, let me refresh the screen. I don't know, for some reason this is not opening, but over here basically you can have. Wait, I'm trying to reduce the number of stocks on which I can see. So I don't know. There seems to be some problem, but anyways, when we go live, obviously we'll go with all bugs that will be fixed. But these are all scanners that we have made for you, and trust me, I mean, have patience with us for a few months. You will get 1 minute delay, and you will get all the scanners for sure. Okay, and that will make your life hell lot of easier. Uh, but yes, we have made all these things, Jagadish. So you know, be with us and watch out for all these things. What Where to watch news about the stocks on the strike? So see, Ambi, over here there is something called as bulletin board. Okay, now see, the screen has got, I mean, it has come over here. Now if you want to see the stocks which are between minus 1 HD and 2 HD and which are below 2 HD, so you get to see it over here. Okay, and इसमें आपको और further filters डालना है कि ऐसे बताओ जो RMI में न्यू बाय दे रहे हैं on 1 year. This becomes a short term scan. Okay, so basically there are no such scan at this point. I think if I do it weekly, I'll get some. Oh, sorry, I was trying to do new sell. My bad. So if I do new buy, okay, new buy में I'm not getting one, but if I do it which are already in buy, so this way you can get that these are the stocks where it is minus 2 HD. Okay, if you want to see the chart over here, you can see that as well कि इसका valuation minus 2 HD के नीचे गया है and it is the RMI is in buy. So these are all scanners that we have built it, but we'll go live one by one. Right now we are testing it, but it will make your life very easy. सो यस अम्बी, टू योर क्वेश्चन, बुलेटिन बोर्ड, यहाँ पर आप सारे स्टॉक्स के न्यूज़ वगैरह देख सकते हो. कॉर्पोरेट एक्शन जो भी हो रहा है, कौन डिविडेंड दे रहा है, किसका स्प्लिट आने वाला है, किसका बोनस आने वाला है, दीज ऑल थिंग्स यू विल गेट इट ओवर हियर. ओके, in deals and insider, which are the ones who are buying and selling the stocks, these all things also you can get it in deals and insider. So this is a one stop shop for everything that you will need. uh, so Vijay, your question was between live data and last candle. So see, what happens is that in live, so let me, I mean, I'll try to explain you with a scanner. See, when you do it live, okay, it will be based on, say, your last candle, which is this one. But imagine that today was the trading day. That was on 8th. I mean, we are in 8th, and we are doing, I mean, there is a live market that is going, and you do last candle. So it will pick up the result for this one. Okay, that is the difference between live. Live will be the latest candle. At EOD, live and last candle will be the same. Okay, I hope that clarifies your doubt.
I wanted to confirm if there is an economic and results calendar available on Strike. I'm tracking a key. So economic events are not there, Ajay, but you will definitely see calendar for this thing. I mean, you will see the calendar for the result. So in this discover, okay, so everything what you want to know about the stock news or anything, you will get it over here. So calendar में आप गए, यहाँ पे these are the list of stocks जहाँ पे result है. So see over here there are 4 5 things. In result you will go, you can check it. Now say I want to find any result. So say I'm just checking over here. Okay, Alchem has this, but imagine I did not know this. I can simply type over here Alchem and I will get the result over here. Okay, if I want to see specifically के Nifty 500 के कौन से results आने वाले हैं, I put the filter over here. And these are all the list of stocks जहाँ पे Nifty 500 के results आने वाले हैं. So once again you will get it in discover calendar and you will get it over here. अगर आपको एक दिन का देखना है, so you simply click on day and you will get it. So Sunday there are no results. Wednesday, Monday there are these results. The next day, Tuesday, there are these results. So you will see the date also changing over here and over here. Okay. So Bala Subramaniam, which benchmark to use? It is up to you. Nifty 50 or Nifty 500 based on whatever you can. I mean, whichever you feel appropriate. Okay. There is no straight answer to this. We can expect. So Jagdish, when can we expect that scanner? So Jagdish, see, we can expect the scanner once we go live with 1 minute, and 1 minute will take few days to maybe a month or so, because each module we are optimizing everything and we'll go live with module one by one. Okay, so once we get to 1 minute delay, then you will start seeing quickly these scanners going live as well. Amvi, during market hours, this insight is live and or any delay. So Amvi, right now, as I mentioned, we are at 5 minute delayed snapshots. Okay, so every 5 minute, the snapshot gets updated. But soon we are going to 1 minute delayed snapshot. Okay, so just to give you an example, see, when market starts at 9:15, the first time it will update is on 9:21. Okay, you will get the 9:21 rate on 9:16. Okay, similarly 5 minutes ka gap is there in the snapshot. That soon we are optimizing it and we'll bring it to 1 minute delay, as I mentioned. So the work is already in full swing, but have patience with us. We will get this done and we'll give the best of experience to you. So Ajay Kale, any specific for gold oil indicators? So no, Ajay, at this point of time, this is only equity specific. And soon, our system stabilize and we put more and more things, then we'll think of putting more new stuff like commodities and so on. But as of now, we are restricted to, the equity markets. So I think I don't see any more questions. I think, we have spent a lot of time on webinar. I hope, all your doubts have got clarified. Once again, thanks a lot for. So yes, once again, thanks a lot for joining this webinar. I hope you all found it helpful. If there is anything, any problem that you get, please go to Strike, click on help. Okay, raise a ticket if you don't understand. Mention anything like I need help, difficulty in understanding, and put over here that please give me a demo or something like that. Okay, our representative will call you and they will help you understand the system. So yes, once again, thanks a lot for joining us, and and I hope you got to learn something new today. If you'll have any feedbacks or so, please do give us. We'll try to make sure and help to make it a robust and a best platform for you all. And just once again, for the people who don't know how to subscribe, once you make an account,
at the top you have plans and billings, and these are all rate that are including GST. Okay, so for a month it is barely 650. If you go to I mean 1 year plan, it is 5610, which comes to the base price of 550 per month, and that again is including GST. So you will get very good deals if you go for a higher time frame, and I hope you'll find a lot of value in this. So yes, once again, thanks a lot for joining us. Hopefully, see you in the next webinar. Until then, thanks, and have a happy weekend.